Hare Krishna. Welcome to today's cyber class on Srimad Bhagavatam, Canto 3, the status quo. Chapter 16, the two doers, keepers of Vaikuntha, Jaya and Vijaya. Cast by the sages, Sloka 24. जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी जया गिरवर धारी यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी जया गिरवर धारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्राये स्वभद्रेषु
तं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. Srimad Bhagavatam 3.16.24. Tatte anavishtam iva satvanide viditso क्षेमं जनाया निज शक्ति विरुद्रतारे नैतावतात्यादि पतिर्वता विश्वभर्तु तेजा अक्षतं त्वावन तस्य सते विनोदा तते अनाभीष्टम् इव सत्त्वनिधे विदित्सो क्षेमं जनाया निजशक्ति विरुद्धिरितारे नैतावतात्याधिपतेर्वत् विश्वभर्तु तेजाक्षतं त्वावन तस्य सते विनोदा तते अनाभीष्टम् इव सत्त्वनिधेर्विदित्सो क्षेमं जनाया निजशक्तिर्विरुद्धे तारे नैतावतात्रयधिपतेर्वत् विश्वभर्तु तेजाक्षतं त्वावन तस्य सते विनोदा. Synonyms. That destruction of the path of auspiciousness te by you anabhishtam is not like you are as sattva nidheya, the reservoir of all goodness, viditsoha, desiring to do, chemam, good, jnanaya, janaya, for the people in general, nija shakti viha, by your own potencies, udirta, destroyed, areha, the opposite elements, na, not, itvata, by this three adhipateya of the propertier of the three kinds of creation. Bata, O Lord, Vishwa Bhartu, the maintainer of the universe. Tejaha, potency, akshetam, reduced to, but avanate tasya, submissive, saha, that te, you are vinodaha, pleasure. Translation. Dear Lord, you never want the auspicious path to be destroyed, for you are the reservoir of all goodness, just to benefit people in general. You destroy the evil elements by your mighty potency.
You are the proprietor of the three creations and the maintainer of the entire universe. Therefore, your potency is not reduced by your submissive behavior, rather by submission you exhibit your transcendental pastimes. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयापताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुस्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Purport. Lord Krishna was never reduced in his position by becoming a cowherd boy or by offering respect of Sudama Brahmana or his other devotee like Nanda Maharaja, Vasudeva Maharaja, Yudhishthira and the Pandavas' mother Kunti. Everyone knew that he was the Supreme Personality of Godhead Krishna. That his behavior was exemplary. The Supreme Personality of Godhead is Satchitanand Vigraha. His form is completely spiritual, full of bliss and knowledge, and it is eternal because the living entities are his parts and parcel. Originally
They also belong to the same quality of eternal form as the Lord. But when they come in contact with Maya, the material potency, due to their forgetfulness, their existential constitution is covered. We should try to understand the appearance of Lord Krishna in this spirit as the Kumaraj pray to him. He is eternally a cowherd boy at Vrindavana. He is eternally the leader of the battle of Kurukshetra, and he is eternally the opulent uh, prince of Dwarka and the lover of the damsels of Vrindavana. All his appearances are uh, meaningful because they saw his real characteristics to the conditioned souls who have forgotten their relationship with the Supreme Lord. He does everything for their benefit. The force exhibited in the battle of Kurukshetra by the desire of Krishna and through the agency of Arjuna was also necessary, because when people become to a religious force is required. Non-violence in this respect is rascaldom. Hare Krishna. From Sloka 16 to 25. The four Kumara are replying to Lord Narayana glorification of the Brahmanas. Last few slokas, the Kumaras said that Lord is not attached to goddess Lakshmi, and that Lord protects the Brahmanas by taking the dust of the Brahmanas on his head, which the Lord submissively declared made him the masters of the internal energy. So in today's sloka, Lord is being glorified as Sattva Nidhi, that he is the ocean, ocean of Sattva and never wants the auspicious path to be destroyed by being the Lord of the three worlds tried. Uh, Three Adi Pati, and the maintainer of the universe, Vishwa Bharta. His potency is not reduced by his submissive, क्षम्यताम, दिखनी submissive behavior. Rather, it is his transcendental pastime. As Lord always desires loka hita, good of the people. For example, with his powers,
invested through kings or rulers in this words. Uh, he he weeds out the opposers of dharma. People become respectable only by following uh, rules of dharma, which is the characterized by bhakti. Sukadeva Goswami prays that Sriyaha patir yagna pati parjapati धीर्याम पतिलोक पति धरापति पतिर्गतिश्चान्दक वृष्णि सात्वताम परसेदताम मे भगवान सताम पति. Lord is the protector of property, prosperity, sacrifice the citizens, the intelligent, the planets, and the earth. He is the protector and goal to be attained for the andhaka, varnis, Brishni, and Yadu. Lord Krishna is always sitting in example in his various Leelas in Vrindavana, Mathura, Dwarka for living entities, consciousness development as Lord Chaitanya. He saw devotional highest of prema bhakti. However, by displaying submissiveness to his devotees, Lord's potency is never reduced. Everyone is seeking the favor of the goddess of fortune, but people do not know that Lord Sri Krishna is the beloved husband of all goddesses of fortune. In the Brahma Samhita, it is said that the Lord in his transcendental abode Goloka Vrindavana is accustomed to herding the Surabhi cow and is served there by hundreds of thousands of goddesses of fortune. All these goddesses of fortune are manifestations of his transcendental pleasure potency, Haladini Shakti in his eternal energy, and when the Lord manifested himself on this earth, he partially displayed the activities of his pleasure potency in his Rasa Leela just to attract the conditioned souls.
Lord Chaitanya was a strict sannyasi so much so that he did not allow and woman to come near him, not even to bow down and offer respects. He never even heard the prayers of the Devadasis offered in the temple of Jagannatha, because a sannyasi is forbidden to hear songs sung by the fair sex. Yet, even in the raised position of a sannyasi, he recommended the mode of worship preferred by the gopis of Vrindavana as the topmost loving service possible to be rendered to the Lord. And Srimati Radharani is the principal head of all such goddesses of fortune, and therefore she is the pleasure counterpart of the Lord, and is non-different from Krishna. In the Vedic rituals, there are recommendations for performing different types of sacrifice in order to achieve the greatest benefit in life. The Lord is the final enjoyer of all kinds of yagna. Therefore, Yagnapati is another name of Lord Vishnu. It is recommended in the Bhagavad Gita that everything be done for the Yagnapati, Yagnar Tat Karmana, for otherwise one's acts will be the cause of conditioning by the law of material nature. Therefore, the Sankirtana Yagna, Sarvana Kirtana Vishnu is especially recommended in this age of Kali. In Kali Yuga, performance of other types of sacrifice is not feasible due to insufficient arrangements and inexpert priesthood. Om Purnam Mada Purnam Idam Purnat Purnam Uddachyate Purnamasya Purnamadaya Purnameva Viseshyate. Om Shanti Shanti Shanti. वह जो नहीं देता है वह अनंत और पूर्ण है। यह दृश्यमान जगत से अलग फिर भी अनंत है। उस अनंत से विश्व उपजते हैं। यह अनंत सारे विश्व उस अनंत से विलीन होने पर भी वह अनंत शेष रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बताते हैं,
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अविशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वो अभी मैं हूँ। जो प्रलय के बाद भी शेष बचेगा वो भी मैं ही हूँगा। ऋते अर्थम यत पत्येत न पत्येत चा आत्मनि तद विद्या आत्मनो मायम यथा भासो यथा तमः। जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतीत मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। प्रेमांजनं छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमशा से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि अपनानी चाहिए। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुषा मनते नारायणा स्मृति। पदार्थ तथा आत्म की पूर्ण ज्ञान से या लोग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से ही मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वो है जीवन के अंतकाल में भगवान की नाम का स्मरण। कृष्ण कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त जानता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। परम पूज्य श्रील जयपताका स्वामी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवतम कृष्ण का साहित्य का अवतार है और स्वाभाविक रूप से हमें श्री कृष्ण के शब्दों का बहुत संग करने की आवश्यकता है और इसमें प्रभुपाद के तात्पर्य हमें अवश्य गहरी अनुभूति देंगे। सो चांट हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। चांट हरे कृष्ण महामंत्र and be happy always. Hare Krishna.